अपने को 5 मिनट ये सेटअप में हो रहा है रोज. मीटिंग आ जाए तो आपको सीधा आइडिया आ जाएगा, आपको सिर्फ जूम लॉगिन करना हाँ बस. स्टार्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. Yes, very good morning, my dear friends. Come on, don't relax, get back, come on. Chalo guys. So friends, we are done with the first very interesting topic, that is basic concepts. The name says basic concepts, but we spoke a lot of advanced concepts. Exactly. So a lot of interesting points we discussed in that topic, especially with regard to so many sections what we learned in this topic, starting from deductions to chargeability, exceptions, started with a person, started with assessee way back 1 week ago when we were all small kids. We started with pillars of democracy, remember? Yes. And now that pillar is very strong. Let's move forward to discussion about the next interesting topic. Are we ready, my dear friends? So what is section 27 beta? 29, 28, 225A, 231, 234, section 3, section 4, chargeability section, section 5, I'll tell you today, don't worry. 87A, rebate, 288A, rounding off of income, 288B, 115 BB, casual incomes, 115 BBE, unexplained incomes, 112, long-term capital general rate 20%, 112A beta. Long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid taxable with rate of 10% on amount exceeding. Wonderful. Is that clear? Brilliant. Chal, maza aa gaya. Come on, beta. Let's start discussion about the second very interesting topic, that is residential status. Let me give a background to this topic first, then we'll start the discussion. As I told you, the first topic was a base for us to understand what Income Tax Act is all about. But now the big challenge is that, see, in your syllabus, funda is very simple. We have got topics like basic concepts, residential status, then we have got your 5 heads of income. What are 5 heads of income? Salary, HP, PGBP, capital gains, other sources. Salary will take little time. Second, house property will take very little time. Third one, it will take lot of time. Fourth one, that will also take lot of time but less time compared to PGBP. Last one will take less time. So the more time taking are 2 heads of income, PGBP and capital gain. So next coming days, we are going to learn the 5 heads of income. Then we'll understand what are the deductions. Then we'll learn about clubbing of income, set off of losses. Then we will learn about calculation of tax, which you already know. But we'll learn about something called deductions given under chapter 6A. Then we'll talk about TDS and TCS along with advanced tax. Correct, no? And now that you know everything, what is your activity now? File income tax return. There is one chapter called provisions for filing return of income. Syllabus is over. Getting clarity, beta? This is all a part of your syllabus. So basically whatever I taught you in the first chapter will all come individually one by one. Sab aa gaya, to syllabus khatam. Getting clarity, friends? So at CA inter level, they are trying to test your knowledge only till the time you get a complete clarity of what income tax is all about. How do you file income tax return? Income tax return file करने के बाद क्या होगा? ऑफिसर नोटिस कैसा देगा? ऑफिसर एक्शन कैसा लेगा? सर्वे क्या है? स्क्रूटनी क्या है? सर्च क्या है? रीअसेसमेंट क्या है? असेसमेंट क्या है? वो सब कुछ CA फाइनल में. समझ में आ रहा है क्या? इंटरनेशनल टैक्सेशन. There is a company like Google. Google is there in India. Google is there in foreign. There are transactions between India to foreign, foreign to India. How do you deal with the transaction? CA final. समझ में आ रहे हैं? इंटर का काम, फाइनल का काम. Exactly. The moment you go there, your level what you learn is totally different. That's why Institute always says that in their prospectus, what they give on day one, they clearly say foundation level we want basic knowledge. Inter level we want working knowledge. Final level we want expert knowledge.
Not my dialogue. Not because I'm an expert. It's because Institute only has told final level you should have expert knowledge. But my only point is to get that expert knowledge, you should be ready to become an expert, no? Because expert will not happen overnight. It takes time. Friends, yes or no, sir? Are we ready? Shall we begin? Come on, beta. Let's start discussion about second very, very interesting topic. And the title of this topic is residential status and scope of total income. What, beta? What is the title name? Residential status and scope of total income. Don't write anything. Just relax for some time. Happily listen. I'll explain the whole concept. Get a great clarity. Then we'll start writing. Okay, beta? Dosto? Sure. First of all, how many of you sitting here are not having Aadhaar card? Wonderful. You have seen your photo on that, no? Brilliant. Are you able to digest yourself? No. Some of the... Hey. I know. Exactly. Come on, get back, guys. Now, is there a difference between being an Indian citizen, not being an Indian citizen? Are you all Indian citizens? How are you saying that? आधार कार्ड, ब्रिलियंट. यहाँ पे किसके पास आधार कार्ड है क्या हाथ में? छोटा वाला, कंप्रेस वाला, जो आप स्कैन करके जेब में रखे नहीं, लंबा वाला. आगे पीछे तो है यार, आगे पीछे जो आपको जो स्कैन करना है उतना ही कलर से बॉक्स करके उसको लैमिनेट करते. पता है, मेरे पास भी वही है. मिल गया बेटा? बैक साइड देयर इज सम लैंग्वेज रिटन. कैन यू रीड दैट लैंग्वेज? आधार इज ओनली ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट सिटीजनशिप. लिखा है बेटा? थोड़ा जोर से पढ़ो ना सबके लिए. सब लोग या हम सिटीजन नहीं है. सर समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहली बात, दैट इज द रीजन आई आस्क्ड अबाउट आधार, बिकॉज आई नो यू ऑल विल टेल आधार कार्ड है हमारे पास, हम इंडियन सिटीजन है. वी आर ऑल इंडियन सिटीजन बिकॉज वी हैव गॉट आधार कार्ड इन इंडिया. बट सी आधार कार्ड व्हाट दे रोट, दैट लैंग्वेज यू विल नॉट फाइंड इन योर कंप्रेस्ड शॉर्ट वर्जन. जो छोटा बना के जेब में रख के घूमते ना सर, उसमें नहीं मिलता. जो द बिग वन, द एक्चुअल व्हिच आधार कार्ड गिव्स, इन दैट इज क्लियरली रिटन इट्स अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट ए citizenship. बराबर है बेटा? Yes, friends. So Susheel, are you an Indian citizen? No. ये दिखता भी थोड़ा फॉरेनर. बोलना भाई. बाय बर्थ. अच्छा, मतलब जो इंडिया में पैदा हो गया उसको सिटीजन है. पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, कैसा प्रूव करेंगे? अरे इंडिया में है तो. अच्छा ये सर, ये मैं क्वेश्चन पूछता सर, ये बोल रहा है बाय बर्थ, ठीक है. एक बंदा जापान का है, वो अपने वाइफ को लेके इंडिया में घूमने के लिए आया. वाइफ प्रेग्नेंट थी, इंडिया में डिलीवरी हो गया. अब कैसा होगा? मतलब हो गया भाई इंडिया में डिलीवरी, ठीक है ना. अब जो बच्चा है उसको इंडियन सिटीजन बोलेंगे क्या? पापा तो जापान का है. अच्छा, मम्मी पापा जापान छोड़ के 10 साल हो गया, 10 साल से इंडिया में, और 10 साल के बाद बच्चा आया. आप बोल. अरे ले लिया मतलब वही तो तेरे से पूछ रहा हूं ना भाई मैं तब से. सी माय क्वेश्चन इज दैट ओनली, यू आर कमिंग टू राइट पॉइंट. मैं तब से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आप कैसा बोलेंगे कि एक बंदा इंडियन सिटीजन है? आपने बोला जो बर्थ यहाँ पे है, मैं तो बोला बर्थ से हो नहीं सकता. आप बोले वो इंडियन सिटीजनशिप ले लिया मतलब कौन देगा? कैसा देगा? आप लोग सबके पास है क्या? वो क्या है? फिर आधार मत बोलो यार. फिर से आधार पे मत जाओ आप. हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट. अरे मैं तब से पूछा यार, एक जापान का बंदा है, चिंगचैंग का बेटा इंडिया में आया. चिंचैंग, हाँ शिनचैंग, वो इंडिया में आया, उसको सिटीजन बोलेंगे क्या? ठीक है दोस्त, आप कुछ बोल रहे थे. आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स. अरे भाई वो तो माइनर मेजर की बात है. ऐसा थोड़ी है कि जो 18 साल के नीचे है उसको इंडियन सिटीजन है, तब तक फॉरेन है, 18 के बाद वो इंडियन बनेगा क्या? इंडिया में बर्थ हुआ तो इंडियन सिटीजन. हाँ, नॉट टोटली करेक्ट, आधा करेक्ट है. रेशन कार्ड आता है, ओके, उसके हिसाब से मालूम पड़ता है, ठीक है. और जिसने 120 डाले डेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. डेज का तो वो सब रेसिडेंशियल स्टेटस की बात है. एंड डोंट गेट योर रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट. आई एम स्टिल डिड नॉट स्टार्ट रेसिडेंशियल स्टेटस. मैं अभी तक सिर्फ सिटीजन का ही बात कर रहा हूं. बेटा आपको क्या लगता है कि सिटीजन कौन है? कुछ लगता ही नहीं है सर. जिसको जो करना है करने दो.
वोटिंग राइट। आप सब लोग के पास वोटिंग राइट है क्या? किसके पास वोटिंग राइट नहीं है? निकलो भाई इधर से, इंडिया से निकलो। आप लोग इंडिया सिटीजन है ही नहीं। हाँ बोलना बेटा। इंडियन पासपोर्ट, गुड, नाइस आंसर। इधर किसके पास पासपोर्ट नहीं है? चलो निकलो निकलो। ये कोई कुछ बोल रहा है। फर्स्ट टॉपिक डन परफेक्टली सर, थैंक यू सर। दूसरा क्या बोल रहे हैं? रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years और मोर कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ओ माय गॉड। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर रेसिडेंट कैसा बनेगा 5 साल? ये क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछूंगा मैं यार। हाँ आप क्या बोले थे? पासपोर्ट बोले ना, ठीक है। और नेशनलिटी डोमिसाइल कहां से सीखे बेटा इतनी बड़ी अंग्रेजी? अरे इंडिया में कब तक रहना चाहिए? कब बोलेंगे इंडियन सिटीजन? वही तो क्वेश्चन है ना यार। अरे आप लोग इतने बार फॉर्म फिल करे, नेशनलिटी बोल के कॉलम रहता ना सर, इंडियन 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 लिखिए ना। प्रूफ क्या है इंडियन? दिखाओ। हम बोल रहे सर आधार। अरे आधार इज ओनली एन आइडेंटिटी प्रूफ बट नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधे लोग डाउट में आ गए, सच में हम लोग इंडियन सिटीजन नहीं है क्या सर? So let me tell you the point. Indian citizen is a person who is born in India and holds a valid identity proof in India, but it's not covering Aadhaar. So basically what is covered is your election voter ID card, or it could be your passport, or it could be your ration card, any kind of ID proof which makes sense. Driving license also is okay, which Indian government only gives. सब लोग हाँ हम बन गए इंडियन सिटीजन। Birth certificate is not a, birth certificate is only a proof of birth. Proof of birth. बराबर। इस पर आपका फोटो है क्या? और बर्थ सर्टिफिकेट पे फोटो है, और ये किसका है दिखा? हाँ कहते हैं हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट पे फोटो ये कब से आया? अरे ठीक है। Anyways, Indian citizen is a person who is born in India and holds a valid identity proof in India, but don't make use of Aadhaar card. I'm sure everybody has got something or the other. करेक्ट। नो somebody बोल रहे मेरा काम पे कुछ भी नहीं है। अरे ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना यार, सम ऑफ ड्राइविंग, और वो भी नहीं है, ड्राइविंग आता ही नहीं, हम साइकिल वाले। अच्छा ठीक है भाई। मम्मी पापा के पास रेशन कार्ड तो है, उस पर फैमिली का फोटो होता है, जिसपे आप भी ऐसे खड़े थे ना बचपन में। अच्छा नाम है ना, ठीक है जो भी है यार, ठीक है छोड़ो। कम ऑन गेट बैक। चलो कैन वी प्रोसीड दोस्तों? नाउ द रीजन why I started discussion about Indian citizen, because under income tax law, under income tax act for that matter, taxability of a person, I repeat again, taxability of a person is not based on citizenship. It is based on residential status. Getting my point everybody? Imagine a case something like this. Shiva Teja is an Indian citizen. I've got passport in India, election card in India, multiple identity documents are there for me in India. Imagine I went to Canada. किधर है कनाडा? ऐसा बोल तो नेक्स्ट गली में, हाँ यूएस के ऊपर वही है एग्जैक्टली। सर कनाडा नाम सुने ना यार, उधर आते। सर गेटिंग क्लैरिटी? बट यू विल नॉट बी अ रेसिडेंट. So to become a taxable person in India, we look at residential status, but not what better? Citizenship. Getting clarity? But of course, lot of countries now made rules, especially India made rules telling that boss, if you want to take citizenship of foreign country, please give up citizenship of India. And once you give up Indian citizenship, you will not have any more right to vote in India. Getting my point? There are a lot of people who are sitting in foreign, especially UK, Europe, London and all, who are Indian citizens, but they did not take that country's citizenship because they are proud to be called as an Indian citizens. You're getting my point? Everybody better? Chalo, what the first point I told? Under income tax law, taxability of a person is based on residential status, but not based on citizenship. Getting clarity, everybody? Now, today, let's concentrate and focus on the residential status of whom better? Individual. Getting clarity? That's a major point. Now, the point is to be noted very clear that residential status under income tax law is determined based on duration of stay in India. Based on what beta? Duration of stay in India.
how long you stayed in India. Based on that, we will decide whether you are a resident or you are not a resident. You might ask one doubt, sir, what difference it makes whether you are a resident or not? If you are resident or not, your taxability will change. Resident is taxable in a different way. Non-resident is taxable in a different way. So if you do residential status wrong, taxability will go wrong. Getting clarity? So the first step to determine is always the residential status, because if that goes wrong, the entire taxability will go wrong. Because the framework of income tax is purely based on residential status. Getting clarity? Speak out. And residential status is based on what, beta? Based on duration of stay in India. Speak out, my dear friends. I repeat one more time, come on. Under income tax law, are we concerned with citizenship? No. We are concerned with what? Residential status. Beta barabar hai? Speak out, beta. And residential status is based on duration of stay in India. Getting clarity? And in case of, my dear friends, in case of first category individual, which is our complete focus today, in case of individual, first, primarily, there are two classifications. Classification number 1, resident, non-resident. What is the primary classification, beta? Resident and non-resident. To tell this resident or non-resident, beta, there are some basic conditions which are given under section 6.1. Given under which section, beta? So 6.1 deals with what conditions? Bolo beta, 6.1 deals with what condition? And there are two basic conditions, my dear friends. What is that? We will see. Now only we'll see, today only we'll see. Today we'll talk completely about individual. Come on. How many basic conditions are there? Two basic conditions. And law is telling, if you satisfy any one or both, we'll call you as resident. If you satisfy none, non-resident. समझ में आ रहा है बेटा? Speak out, my dear friends. I repeat one more time for everyone's benefit. Come on, please repeat again. Under income tax law, is the taxability of a person based on citizenship? Yes, बोल रहा क्या भाई? It is based on what? Residential status. And residential status for individual is based on? Residential status for individual is based on duration of stay in India. Beta bolo. It is based on duration of stay in India. Clear, my dear friends? Individual first classification is what? Resident and non-resident. That is based on what? Basic conditions. दोस्तों please participate. Come on. Basic conditions. Given under which section? कितने condition है बेटा? दोनों satisfy करे तो? एक भी हुआ तो? First वाला हुआ तो? Second वाला हुआ तो? दोनों भी हो गया तो? दोनों भी नहीं हुआ तो? What are the conditions? We'll see. Okay? But after that, second further classification, that is resident and ordinarily resident. In exam, students are making the biggest blunder by writing the word resident and ordinary resident. He is not ordinary. It is ordinarily. Ordinarily matlab generally, usually. Correct, no? Example, ordinarily, I will eat 2 chapatis. Sometimes exception case, 3, 4, depends. 5, 6, 7 nahi hai bhai. Sir, getting clarity, everybody? Ordinary is different. Ordinarily is different. What ली? ली. समझ में आ रहा है क्या? Second classification, resident, but not what ली? Ordinarily resident. बेटा समझ में आ रहा है क्या? Friends, speak out. In short, we call this fellow as ROR and he is called RNOR. बेटा समझ में आ रहा है? दोस्तों बोलो. Come on, individual, what is the first classification? Resident and non-resident. To check whether resident or non-resident, we look at what conditions? Basic conditions. कितने बेटा? 2. दोनों में से अगर एक भी हुआ तो? दोनों भी हो गया तो? दोनों भी नहीं हुआ तो? वो conditions क्या हम देखते हैं, don't worry. And once you are non-resident, we look at further classification.
But if you are non-resident, once you are resident, we look at further classification. If you are non-resident, non-resident is non-resident only. There is nothing called NROR, NR, ऐसा कुछ भी नहीं है. Non-resident is a non-resident. But resident is further classified into ROR and RNOR. समझ में आ रहा है बेटा? Let me tell you very clearly. Today only I will teach. ROR taxability is different. RNOR taxability is different. NR taxability is different. That is the reason why we are bifurcating and classifying them. There is a fundamental, strong, valid reason why they are being classified. Because for every kind of person, taxability is different. समझ में आ रहा है बेटा? Speak out बेटा. Resident, how many conditions are there? Which sections? 6(1). If 2 satisfied, 1 satisfied, both not satisfied. Once you are resident, we look at further classification called ROR and RNOR. समझ में आ रहा है बेटा? For that बेटा, there are additional conditions. What बेटा? Which are given under section 6(6). Which section? And law is telling, my dear friend, both satisfied. We'll call him as ROR. Any one or none. बेटा समझ में आ रहा है क्या? एक काम करते हैं, इसको किधर लिखते हैं? एनी वन और नन. ये आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना सर? That's it. बेटा समझ में आ रहा है? Everybody, my dear friends, come on. Basic conditions given under which section? 6(1). Additional given which section? Basic is required for what purpose? To bifurcate resident or non-resident. Purpose of additional conditions? ROR and RNOR. Beta barabar hai? I'll write one small table. Let's understand. Then we'll start learning the conditions. Conditions पढ़ने के बाद हम लिखना चालू करेंगे. तब तक एक word नहीं लिखेंगे. सुन लो ध्यान से. ठीक है ना बेटा? Come on, my dear friends. Listen very clearly now. Concentrate. Everybody think properly and tell me the answer. Basic, additional, status. Status का मतलब single, committed वो नहीं है. ROR, RNOR, NR. Complicated status. Oh. मतलब अगर एक गर्लफ्रेंड है तो नॉर्मल रहता है यार. 2-3 मेंटेन करे तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा ना. ऐसे थोड़ी होगा. बराबर है ना? 2 गर्लफ्रेंड है, एक को भेजने का मैसेज दूसरों को भेज दिए. Yesterday we had lot of fun. वो मैसेज किसी और को गया? हो गया ना? End of the day. चलो प्रोसीड. भाई बराबर है ना? सुजल तू इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं? हल्का कुछ. चलो, can I proceed? Ready बेटा? Come on. Basic 2 satisfied, additional 2 satisfied. मतलब क्या? Conditions. अरे ये बड़ा आदमी भाई पूरा satisfy करा. वो भी 2 किया, वो भी 2 किया. बोलो बेटा. Basic 1, additional 2. Basic 0, additional 2. Nothing called no or नहीं. Basic 1, additional 1. RN. Basic 1, additional 0. RN. Basic 2, additional 0. RN. Basic 1, additional 2. ROR. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Sir, there is nothing to mug up here. Basic fundamental logic. Boss, I'll tell you now. We'll start with the conditions. Basic में 2 condition दिए boss. दोनों में से कुछ भी satisfy करो, हम आपको क्या बोलेंगे भाई? Resident. दोनों में satisfy करो, अच्छी बात है भाई, तू बड़ा आदमी है, तू फिर भी resident ही है. ऐसा कुछ नहीं है कि special resident है. Resident ही है. Clear है ना बेटा? उसके बाद further क्या check करेंगे हम? ये ROR है या RNOR है? ROR RNOR कैसे divide करेंगे बेटा आप? Additional condition. कितना बेटा additional? दोनों भी satisfy करेंगे भाई, तभी तेरे को बोलेंगे हम ROR. दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ, तेरा status बन गया RNOR. But let me tell you, the taxability of ROR is different, taxability of RNOR is different, taxability of NR is different. Now, how do we tax this each kind of person? We will learn in detail.
But before we learn how do we tax this person, first let's understand what are the conditions to be satisfied. Are we ready, beta? Speak out, my dear friends. And we are still talking only about individual. Tomorrow we'll spend a lot of our brain on HUF company and everything, but individual only is important. 99% exam, individual only will come. Because more concept is in individual only. HUF companies and all, I'll not take much time. 10 minutes में हो जाएगा पूरा concept हो. पर एक concept 2 दिन लगेगा. Clear है? Chalo. Let's look at what conditions now. What conditions? Basic conditions. Given under which section, beta? 6(1). Of course, 6 subsection 1. No doubt about it. Is that clear? Shall we start? What are the purpose of basic condition? To check whether a person is a resident or non-resident. That's all. Clear, beta? Friends, speak out. Come on. First possibility is he must be in India. He must be in, what is India? 225A. Territory, territorial waters, subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone, airspace about territory and territorial waters. Barabar hai beta? Come on. He must be in India. He must be in India for a period of 182 days or more. 182 days or more. 182 days or more during the PY. Do we know what is PY? Year in which income is and 234 and section. Exactly. इसलिए इतना मेहनत करे फर्स्ट चैप्टर में. समझ गए बेटा? बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या है? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Getting clarity? Bolo beta, are you all residents? Shiva Teja also is a resident. Last year I stayed in India for 182 days or more. So getting clarity? So what is the first condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or, what beta? Or only, no? Why or? कोई भी एक कंडीशन बराबर है ना? Second possibility, he must be in India. He includes Shiva also. No emotions. It's okay, boss. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year. And 365 days. Come on, beta. How many days? 365 days or more during 4 years preceding the previous year. During 4 years preceding the previous year. Beta, समझ में आ रहा है क्या language? Everybody. Now, let me put it in simple language, my dear friends. For our exam, what is assessment year? 23. What is previous year? 4 साल आगे लेते भाई. 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19. Law is telling boss, this year you stay in India for 182 days or more. Speak out. Or second option for you is this year stay in India for greater or equal to 60 days and these 4 years put together greater or equal to 365. ये language समझ में आया क्या बेटा? This diagram is this diagram is clear for all of us, no? Friends, please reply, come on. Everybody getting clarity on this diagram, all of us? भाई लोग बोलो ना यार. Are we clear with this? Basic conditions given by which section? How many conditions are there? What are 2 conditions? He must be in India
for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. During 4 years preceding the, so for the 365 calculation we don't take previous year. 4 साल previous year पहले का निकालेंगे, क्यों? previous year में 60 दिन देखे ना यार, 60 दिन हो 60 exactly, करेक्ट ही बोला ना यार. Are we clear? One more time. What a basic condition. Which section? What a first condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the, exactly, 4 years preceding the. समझ में आ रहा है बेटा? बेटा बोलो. Now let's take 1-2 examples so that clarity will come. ठीक है ना बेटा? दोस्तों रेडी है? चलो बेटा, let's take some example. Sir, imagine example number 1. Let's take 3-4 examples. Let us say our friend Mr. Susheel, he is staying in India for 100 days every year. How many days, sir? 100 days every year since last 5 years. How many days staying in India? 100 days. मतलब हर साल 100 दिन रह रहा है यार. कितने साल से कर रहा है ऐसा काम? हाँ, क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में आएगा 2 मार्क के लिए, इजी आर और एनआर. नो डाउट अबाउट इट, ही विल डेफिनेटली बिकम ए रेसिडेंट. क्यों बेटा? He has satisfied second basic condition. He did not satisfy first basic condition, but he has satisfied second basic condition. समझ में आ रहा है क्या? बेटा बोलो. Next, example 2. Sir, in this chapter, we are not concerned with calculating tax. We are more concerned about number of days to determine whether resident or non-resident. समझ में आ रहा है दोस्त? Everybody, are we getting clarity, all of us? Please reply, come on. Clear, no? Done. Next example. One person, Mr. दोस्त आपका नाम क्या है? Chintan. CHINTAN. Okay. One of our friends, Chintan, he is in India as under C year. Previous year, 22-23. He is there for 70 days. How many days? 21-22, 100 days. 20-21, 84 days. 19-20, 0 days. 18-19, 220 days. 17-18, 50 days. Prior to 17-18, 0. ठीक है ना बेटा? चलो निकालो रेजिडेंट स्टेटस के. रेजिडेंट है क्या? श्योर? What is status beta? Are we concerned with 17-18? We are concerned only till, बोलो बेटा, बराबर है? Can he satisfy the first basic condition? Obviously, by first करना है तो तेरे को 182 days रहना पड़ेगा इंडिया में. Can he satisfy second condition? बोलो. No, obviously no. Why? 60 is satisfied, but in last 4 years it is not 365. अरे टोटल निकालो यार, 100 plus 84, 184 plus 120, 304, but we want 365. What is the status then? That's it. ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. Where they give the days. Are we getting clarity? समझ में आ रहा है कैसा करना चाहिए? बेटा बोलो ना यार. सर बहुत बार ऐसा होता है जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं ना, ये लोग सितंबर से पहले ही निकल जाते हैं. मतलब अगर अप्रैल में आए, सितंबर से पहले इंडिया से निकल जाते हैं, क्योंकि सितंबर के बाद रुक गया तो 6 महीना हो जाएगा. 6 महीना का मतलब 182 डेज खत्म हो जाएगा. ये लोग बंदे रेजिडेंट बन जाएंगे. अगर रेजिडेंट बनेंगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा इनको.
जो आईपीएल प्लेयर्स क्रिकेट मैच के लिए खेलने आते, ये बंदा कोई बंदा 180 days रुकेगा नहीं. So getting clarity? And they won't even fulfill the story of the 65 days also in last 4 years. You're getting my point, everybody? Speak out. लास्ट 4 years होना मतलब कम से कम हर साल 90 days होना चाहिए ना यार, मिनिमम एवरेज निकालेंगे तो. सर बोलो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 3. ये पूरा लिखेंगे हम लोग, बट पहले आंसर दो मुझे. वन मोर पर्सन, मिस्टर, दोस्त आपका नाम? MOHNISH, am I right? MONISH. Good. ठीक है. Mr. Monish, sorry, excuse, came to India on 4th April 2022 for the first time. For what time, sir? पहली बार इंडिया को आए. कब आया? 4th April 22. And left on 9th September 22. सबसे पहली बात, सेकंड कंडीशन हम देखेंगे क्या? नहीं, सेकंड लॉजिकली फुलफिल नहीं कर सकता मोनिश. क्यों? सेकंड करना मतलब पिछले 4 साल में 365 होना चाहिए ना. अरे बोलना पहले, मेरे को जवाब दो यार. आंसर, पिछले 4 साल 365 होना चाहिए ना. वो मोनिश फुलफिल कर सकता क्या? मतलब सेकंड सेटिस्फाई करने का कोई स्कोप ही नहीं है. सिर्फ एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट वाला है, जो देखते हैं हम. कितना है फर्स्ट वाला? 182. पर ये कितना है? 158 हो रहा है क्या? बस इतना ही है. वही तो क्वेश्चन है ना, मैं जो क्वेश्चन पूछा वही तो रीजन है मेरे पास पूछने का. मेरा क्वेश्चन पूछने का वही तो रीजन है. कैसे कैलकुलेट करें आप लोग, बोलो. पहले अप्रैल का कितना दिन है अप्रैल में? 26 days he is in India. Speak out. Day of coming is always included. Speak out, beta. 27. The reason being very clearly 4th he has come. So 4th is also included. The business is not there for only for 3 days. सर अप्रैल में 30 दिन होते हैं ना बेटा. जैन में कितने रहते? फरवरी स्पेशल केस 29. लीप ईयर कितने साल में आता है एक बार? वंडरफुल. मार्च 31. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन. क्लैरिटी जो है ना इसमें. थैंक यू सो मच. चलो अप्रैल में 27 बराबर ना. नेक्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अच्छा, he is only for 9 days, no? Exactly. 150. For information, with this example, I taught you one concept. That concept is day of coming and day of going is always included. Concept समझे क्या बेटा? Day of coming, day of going is always included. समझ आ रहा है नहीं कॉन्सेप्ट? बोलो ना यार, क्या है इसका स्टेटस? This fellow is Monish is a non-resident. मैं भूल गया यार किसका नाम लेगा. Monish is what, sir? Non-resident. So getting clarity? Speak out, beta. Now what will happen if he is non-resident? What will happen if he is resident? We'll learn. Control. Today only I'll teach control. Beta clear है? समझ में आ रहा है क्या? What is the discussion we have completed now? Basic condition. Just we understood when will a fellow become resident, when will a fellow become non-resident. But the problem here is next classification to look at additional and decide whether it is ROR or RNOR. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Which section deals with basic condition? How many basic conditions are there? 2. What are the 2 basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. One more last time. He must be in India for a period of 60 days, for a period of 182 days or more during the previous year. Or
he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Any one basic condition satisfied, this fellow will get a title of दोनों भी गया, दोनों में से एक भी हुआ, दोनों भी हो गया, बड़ा आदमी है. Still resident only. There is nothing called special resident, double resident. Resident is resident. Is that clear? Everybody, friends, and non-resident is a non-resident only. But if a fellow becomes a resident, then the bigger challenge comes. What is the bigger challenge? To look at the further classification. What is further classification? Based on additional conditions. Given under which section, beta? 6. Getting clarity? Everybody? And based on 6 additional conditions, will classify whether a person is resident and ordinarily resident, or he is a resident but not. What will happen if he is ROR? What will happen if he is RNOR? I'll teach you. Today only I'll teach you. Control. Okay? Ready, beta? यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो यहाँ तक हम पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हम एडिशनल कंडीशंस बात करेंगे. ठीक है ना? बिकॉज एक साथ वो भी पढ़ा दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा. Put the chapter name, residential status. Start on a fresh page, residential status and scope of total income. Title name, you put what I am telling. You please write what I am telling. Residential status and scope of. Residential status and scope of. And scope of. What beta? Total income. Residential status and scope of total income. Residential status and scope of total income. रेजिडेंट बोल देंगे ना ऑब्वियसली, नो प्रॉब्लम, बट वो साल के तो रेजिडेंट है. सी रेसिडेंशियल स्टेटस, आई टेल यू वन पॉइंट, लिसन. रेसिडेंशियल स्टेटस विल चेंज ईयर आफ्टर ईयर. जरूरी है कि ये साल रेजिडेंट तो अगले साल रेजिडेंट बनेंगे? अरे मेरा क्वेश्चन समझे क्या? इज इट मैंडेटरी दैट ये साल रेजिडेंट है तो नेक्स्ट साल नेक्स्ट भी रेजिडेंट रहेंगे? हर साल का अपना अपना है ना यार. नाउ टेल मी, इफ माय वाइफ इज अ रेजिडेंट, इज इट मैंडेटरी दैट शिवा इज आल्सो रेजिडेंट? और ऐसे थोड़ी है यार, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग है, दोनों का पैन कार्ड अलग है. एज पर इनकम टैक्स वी बोथ आर डिफरेंट. एट होम वी कुड बी सेम, बट इनकम टैक्स बोथ आर डिफरेंट assessees, boss. Getting clarity? Sure. Heading क्या लिखे बेटा? Residential status and scope of total income. First bullet point. Under income tax. Under income tax. Come on. Taxability of a person. Under income tax. Taxability of a person. Under income tax. Taxability of a person is based on. Under income tax, taxability of a person is based on residential status. Under income tax, taxability of a person is based on residential status. Is based on what beta? Residential status. But not based on what beta? Citizenship. So clear? Next point. Residential status of an individual. Residential status of an individual. Residential status of an individual is determined. Residential status of an individual is determined based on duration of stay in India. Chalo beta, based on what beta? Duration of stay in India. How long is staying in India? Clear beta? Next point. In case of individuals and HUF,
In case of individual or HUF, there are three classifications. There are three classifications. By the way, तीन क्या है बेटा बोलो आप लोग बोलो. ROR, RNOR, NR. बराबर है ना? In case of individual and HUF, there are what beta? Three classifications. Full stop. However, come on. In case of others मतलब क्या आएगा इधर बेटा बोलो? AOP, BOI, companies, firms. बराबर ना? In case of others, however, in case of others, only two classifications. In case of others, only two classification. In case of others, there is only two classification, that is resident and non-resident. Two classification, that is resident and non-resident. सबको समझ में आया क्या ये पॉइंट? एवरीबॉडी स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट पॉइंट. Residential status of an individual. Residential status of an individual. Residential status of an individual is determined. Residential status of an individual is determined by applying the provisions of section. By applying the provisions of section 6.1 and 6.6. By applying the provisions of section 6.1 and what beta? 6.6. समझ में आ रहा है दोस्तों? Below that, take this diagram. So primary classification is resident and non-resident. Secondary classification, ROR and RNOR. हो गया बेटा लिखना. So basic condition given with section 6.1. Additional given with section. Basic conditions बोलो बेटा एक बार, पता तो है ना अपने को भी. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or
he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. बराबर है बेटा? दोस्तों, everybody, I think I'm sure this examples also make sense for all of us. पक्का नो? Good. आपको ये लिखना है क्या? 1 2 2 1 ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, मतलब याद रखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें यार, बेसिक सी बात है. मतलब बेसिक में अगर एक भी सेटिस्फाई करे भाई ये रेजिडेंट बनेगा, एडिशनल दोनों भी करेंगे तो अभी आपको और बनेंगे. बराबर है ना? माय सजेशन, डोंट राइट दिस 1 2 2 1 2 2. दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. आई गेव लिखना है आपको, मर्जी आपको लिखना है तो लिख लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट चॉइस इज योर्स. ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो और बाकी लोग बेसिक कंडीशन स्टार्ट करो. बोलो दोस्त. So done? So what are basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Second, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Is that clear? Done. This also need not write. That's only for understanding I gave. Clear beta? Chalo, examples लिख लो बेटा. Example 1 2 3 तीनों example लिखने हैं.
मतलब आप पूछे हर सिटीजन रेजिडेंट होता क्या? नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना. जरूरी है कि हर सिटीजन रेजिडेंट थोड़ी होगा. अगर एक सिटीजन है पूरा साल वो इंडिया से बाहर है, बेसिक सेटिस्फाई कर सकता क्या? तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. इसलिए मैं फर्स्ट लाइन वही लिखा ना, अंडर इनकम टैक्स रेजिडेंट स्टेटस इज नॉट बेस्ड ऑन, I mean, taxability is not based on citizenship. It is based on residential status. क्या क्लियर? एग्जाम्पल 2 लिख लिया क्या? एग्जाम्पल 3 भी लिख लो बेटा. Manish, your example. हो गया लिखना? यस, गुड. Done, my dear friends? Guys, please reply. Chalo, please put one side heading, points to be noted. I'll tell you 2-3 points. We'll write that. That is your date of living, date of coming, both are included. बराबर है ना? चलो, first point. Stay in India. Okay. Points to be noted. First point, beta. Stay in India need not be continuous. Need not be what बेटा? Continuous. बेटा बोलो, जरूरी है कि 182 days कंटिन्यू रहना चाहिए? आया गया आया गया आया गया. Correct, no? Next point. Note 2. Second point. Place of stay can be anywhere in India. बराबर है ना? 10 दिन चेन्नई, 10 दिन बॉम्बे, 10 दिन हैदराबाद, 10 दिन पुणे, 10 दिन बेंगलोर, 10 दिन गुजरात, 10 दिन असम. चलता है ना सर? इंडिया तो इंडिया ही है ना यार. नेक्स्ट पॉइंट. डे ऑफ कमिंग and the day of going. The day of coming and the day of going is included. Is included for the purpose of calculation. Don't write computation, calculation. Computation is only for total income and tax liability. Correct, no? Day of coming and the day of going is included for the purpose of calculation. Calculation of number of days, no. Number of days will you compute, beta? Income and tax is computed. These days, no. So are we clear? Everybody, my dear friends? That's all. With this, what discussion is over, beta? Basic conditions. Under which section? कितने condition है? How many are there? चिंतन, बोल first वाला क्या है? मोर या 182 days? कंफर्म एक बोल. मोर देन 182. दोस्त ऐसे लिखिए तो मार्क्स नहीं आएगा मेरे भाई. 182 days और मोर. अगर आप मोर 182 याद रख लिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा वो, सॉरी, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन देगा वो आदमी जो एग्जैक्ट 182 देगा. ऐसे है गॉड. ठीक है ना मालिक? सर समझ गए ना आप लोग? 182 days और मोर. दोस्तों क्लियर है? एवरीबडी प्लीज स्पीक आउट. सर्वेश बोल, सेकंड वाला क्या है? 60 days और मोर कब? तुम्हारे घर पे, मेरे घर पे? एनीवेयर इन इंडिया. किधर? कब? हाँ तो बोलना भाई पूरा फिर. हाँ,
वंडरफुल, सब क्लियर दिस पॉइंट? चलो बेटा एक और बार रिवाइज करते, बोलो. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or second option, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. कुछ डाउट नहीं हो, ठीक है सर, क्लियर है क्या एवरीबॉडी? डन. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट व्हाट बेटा? additional conditions given under which section beta? Don't write, relax, first listen. Chalo beta, what is the purpose of additional condition? To determine whether that R is ROR or RNOR. Sir, what difference it makes, sir? I will tell. Today only I will tell. Beta clear है? यहाँ तक समझ में आया बेटा? चलो. What are the additional conditions which are given under which section beta? 6. Let's see. First one. He must be resident in India. How will he be resident? By satisfying any one basic condition. Simple answer. 182 सब क्यों बोलना है? बराबर है ना? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. चलो बेटा क्या लिखे हम लोग, बोलो. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. मतलब पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 साल ये भाई साहब रेजिडेंट होना चाहिए था. गेटिंग क्लैरिटी? 2 साल रेजिडेंट होना मतलब क्या करना चाहिए था 2 साल? वही क्या बेसिक कंडीशन दोनों में से एक सेटिस्फाई करना चाहिए था. अरे बराबर है ना? ये आरओआर का नाम क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. सर समझ में आ रहा है क्या? He must be resident in at least 2 out of 10 previous years preceding the. तो इसके लिए प्रीवियस ईयर देखेंगे क्या? नहीं, उससे पहले का 10 साल. एग्जाम में स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे हैं बोलो? Instead of writing proper language like this, they are making a mistake. Writing he must be in India in at least 2 out of 10 previous years. भाई साहब आपने लैंग्वेज ही चेंज कर दिया. He must be in India मतलब आप बोल रहे हैं कि 10 साल में 2 साल इंडिया में रहना चाहिए था. एक्ट ऐसा बोला है क्या? एक्ट ने क्या बोला है? He must be resident in India. Students are forgetting the word resident and writing he must be in India in at least 2 out of 10 previous year. क्या करेगा? 2 साल है तो घर पे लेके जाएगा. क्या ये be in India? He must be what in India? समझ में आ रहा है क्या? बोलो, रिपीट करो पॉइंट. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. दोस्तों बराबर है? And only, right? क्यों? दोनों करेंगे भाई साहब तभी आरओआर बनेगा. दोनों में से एक भी गया आरएनओआर, दोनों भी गया एनआर आरएनओआर. अरे बोलो दोस्तों, क्लियर है ना? कौन से कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम? एडिशनल कंडीशंस. दोस्तों ध्यान दे रहे हैं क्या? साइलेंट कर दिया ना? ठीक है, अच्छी बात है. उनको बोल देना हम सीए स्टूडेंट है, तू नहीं है, तेरे को काम धंधा नहीं है, पर हमको बहुत काम. बोल देना उसको, ठीक है ना? बराबर है. हम लोग अलग अलग लोग हैं यार. हम लोग अलग ही दुनिया जीते. सुबह सुबह उठते, रात तक बैठते, उसके बाद भी पढ़ाई करते, उसके बाद मेस ढूंढते, फिर खाने के लिए ढूंढते. कभी कभी लेट हो गए तो खाना नहीं मिलता. कितना प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में. बीकॉम वालों को, बीटेक वालों को प्रॉब्लम है क्या यार? नहीं यार. उनके साथ कंपेयर भी मत करो अपना लाइफ. सिंपल. बिकॉज इन ऑर्डर टू कंपेयर दे मस्ट बी कंपेरेबल. अरे यस और नो से खत्म यार. अपन अलग लोग हैं यार. चलो फर्स्ट कंडीशन 182 डेज. बेवड़े में क्या क्वेश्चन पूछा? He must be what? Resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And रुकना भाई. And he must be in India. Be in India मतलब इंडिया में रहना चाहिए. क्या बात है, क्या ट्रांसलेशन है? He must be in India
for a period of 730 days or more during 7 years. Other words, during 7 previous years preceding the previous year. First one basic logic you have to catch. The basic logic is that दोनों additional conditions में previous year की बात ही नहीं कर रहे हम, previous year के पहले की बात कर रहे, क्योंकि हम ये डिटरमाइन करना चाह रहे कि ये ऑर्डिनरीली है या नहीं है. ये ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरीली है. क्या है आरओआर का फुल फॉर्म? रेसिडेंट एंड. सर बहुत लोग ऐसे ही है सर, ऑर्डिनरी बोलते. मैं तो शॉक हूं यार. मैं बच्चे से पूछा ऑर्डिनरी क्या है या नॉनसेंस, वो बोल रहा है हमारा फैकल्टी ऐसे ही बोला है. बोला वो एक नमूना है, तू एक नमूना है. भाई इट्स नॉट ऑर्डिनरी मैन, इट्स ऑर्डिनरीली. देयर इज अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट. ऑर्डिनरी मींस यूजुअली. पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट बन गए, पिछले 7 साल में 730, हिंदी में क्या बोलते, 730, 750, अरे 750 आ रहे हो. अरे मुझे आता थोड़ा थोड़ा यार ये सब वर्ड्स, तो मुझे कंफ्यूज मत करिए सब फिर से. मैं पहले ही 77 मतलब समझ में नहीं आता, मैं बोलता हूं लोगों को 70-7, और तू मेरे को कंफ्यूज कर रहा है इसमें. क्या बोलते 77? ठीक है 70-7 ही इजी है. ठीक है सर, समझ में आया क्या? तो ही इज नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्या नाम है इसका? हाँ क्या बोलो? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. वापस, अगर आपके सामने कोई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बोला बेटा, एक देने का मुझे ऐसा डाउट आ रहा है लास्ट डे तक कोई ना किसी को फेंकेंगे. ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. बोलो बेटा, व्हाट आर द 2 कंडीशंस? कम ऑन, लेट्स रिवाइज. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year, and he must be in India for a period of 730 days or more preceding the previous year. Sir, समझ में आ रहा है क्या? Speak out. Some of them will teach reverse language. थोड़े देते थोड़े different लोग जो reverse language भी बताते. वो रिवर्स मतलब कभी कभी बुक्स में आपको दूसरे बुक्स में रिवर्स लैंग्वेज मिलेगा, वेयर दे विल टेल ही मस्ट नॉट बी इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस. अरे ही मस्ट नॉट बी इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस मतलब क्या है? यही हो गया ना यार. हम बोल रहे राम किल्ड रावणा, वो बोल रहे रावणा वाज किल्ड बाय राम, और बोल रहे राम किल्ड रावणा. गलत है भाई. थोड़ा तो हाँ कॉमन सेंस. एग्जैक्टली सर, क्लियर है? सुजल भाई, आप सुजल भाई का एक एग्जांपल लेंगे यार, ठीक है ना? बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट वापस रिवर्स करते. व्हाट इज सेकंड कंडीशन? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट? 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. अब मैं एक बात बोलूंगा आपको, ध्यान से दिमाग में रख लो, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, सर क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने वाले हम लोग. वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व. एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन तो बुक में ही है, और 4-5 क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करूंगा. ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक अलग है, वो अलग है, वो बाद में देखेंगे दोस्तों. नाउ लिसन केयरफुली. सर, ऑलवेज माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, माय सजेशन टू यू ऑलवेज इज दैट लुक एट सेकंड कंडीशन. दैट्स मोर इजी फॉर यू, बिकॉज पिछले 7 साल में टोटली तो करना है, फर्स्ट वाला करना है, तो फर्स्ट वाले के लिए वापस फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन, थोड़ा मेहनत लगेगा ना सर. उससे पहले आपको इजी क्या है, पहले सेकंड वाला देखो. 7 साल में 730 हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर 730 हो रहा है, फिर हम दिमाग चलाएंगे फर्स्ट वाले पे. अगर 730 ही नहीं हुआ, फर्स्ट वाले के ऊपर ब्रेन भी अप्लाई मत करो, क्योंकि जब सेकंड वाला गया तो फर्स्ट वाला सेटिस्फाई करके क्या करेंगे? घंटा रखने का है क्या उसमें? सर समझ में आ रहा है क्या? Once second condition is not satisfied, this fellow becomes an RNOR. Don't look at first condition also. Sir, your time should not be wasted. आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा. I'll ask you one question. Now think properly and tell me. Listen very, very clearly, sir. Are we ready? दोस्त, आपका नाम क्या है दोस्त? गगन. Oh my God, such a powerful name, man. Gagan. Airspace, about territory, and he's also in India. Now, Gagan,
one of our friend Gagan, he is coming to India every year for 100 days. Every year for 100 days. He is doing like that since last 10 years. मतलब लास्ट 10 ईयर से हर साल गगन भाई इंडिया को कितने दिन के लिए आ रहे? 100 दिन. करेक्ट ना? बिना कैलकुलेटर यूज करे, बिना ज्यादा सोचे, सीधा मेरे को बोलो आंसर है. ये ROR है, RNOR है या NR है? स्पीक आउट. ROR. नॉनसेंस आंसर. ही विल बिकम RNOR. बिकॉज सबसे पहली बात, बेसिक कंडीशन में सेकंड वाला सेटिस्फाई करेगा ना, 63 पे तो हो जाएगा ना. जब सेकंड वाला सेटिस्फाई किया बेसिक कंडीशन, भाई साहब क्या बन गए? रेसिडेंट. तो एनआर के तो सीन ही नहीं है. जब रेसिडेंट बने तो क्या देखेंगे हम? एडिशनल. मैं आपको एडिशनल में क्या देखने को बोला पहले? सेकंड वाला क्या है? 7 साल में 730 होना चाहिए. ये भाई साहब हर साल कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 100 दिन. 7 साल में कितना हुआ? 700 दिन. 730 हुआ क्या? जब सेकंड कंडीशन हुआ ही नहीं तो फर्स्ट देखना है क्या? तो स्टेटस क्या है भाई साहब का? RNOR. अरे समझ में आ रहा है क्या? सर कैलकुलेटर में सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जहां पे देंगे ये साल 140 डेज, ये साल 35 डेज, ये साल 180 डेज, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट पहले लॉजिक तो समझे, कॉन्सेप्ट तो समझे. सर क्लियर है क्या? पहले तेरे को समझ में आएगा? ठीक है. सर वी क्लियर? सो डिड वी अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू टू लुक एट सेकंड एडिशनल कंडीशन वेरी इजीली? बिकॉज़ 7 साल में 730 होना ना यार. इफ दैट इज सेटिस्फाइड, लेट्स अप्लाई आवर ब्रेन ऑन फर्स्ट कंडीशन. अब सेकंड ही गया तो फर्स्ट वाला दिमाग क्यों चलाए? टमाटर चला के चेक करेंगे ना, चेक करके क्या करेगा? ऐसे ही खुशी मिलती. ठीक है, कर ले. सर क्लियर है? एवरीवन, बेसिक कंडीशंस गिवन इन विच सेक्शन? हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? बोथ satisfied, none satisfied, one satisfied. Clear है ना? Once resident, we look at what conditions? None satisfied. NOR. R को काट दिया क्या तू? One satisfied, none satisfied, both satisfied. ठीक है ना? एडिशनल आपको दोनों सेटिस्फाई करना है. दोस्तों चलो, अपना असेसमेंट कौन सा एग्जाम के लिए? प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई? चलो 10 साल बोलो. 2021, 1920, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15. बीच में कुछ गया क्या? ओ माय गॉड. क्या गया? ओ ये भी गया क्या? ठीक है. 21, 22, 20, 21, 12, 13, 11, 12, 10, 11. अच्छा हो गया क्या? किधर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपको समझ में आ रहा है क्या यार? बोलना दोस्तों. चलो भाई, लेट्स यूज violet color for this person and tell the concept. Come on, tell me what is the first basic condition? 182 days or more during the previous year, or 60 days or more during the previous year, and इधर तक लेके आएंगे उसको. समझ में आ गया? चलो लेट्स यूज ब्लैक कलर. कम ऑन. ये 10 साल में, बराबर है ना? 10 साल में 2 out of 10 प्लीज बिकम ए रेसिडेंट. वाव, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट. greater or equal to 730. दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं बेसिकली. टू चेक वेदर इज ROR, RNOR, NR. So how many classifications are there? 3. ROR, RNOR, NR. Did you understand everybody? चलो बेटा बताओ, what are basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more
during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Clear, beta? If he is non-resident, story ends there. If he is resident, we look at additional conditions. How many are there? What the first one? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the, and he must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. So clear? I'll ask one question. Think properly and tell. Okay? Let us say there is one person, Mr. Anand. ये भाई साहब का कहानी सुनो. Previous year 22-23. He is there for 100 days in India. ठीक है बेटा? 21-22 60 days. 20-21 200 days. 19-20 nil. 18-19 150 days. 17-18 300 days. 16-17 100 days. 15-16 nil. 15-16 nil. अरे वार, सबसे पहले बेसिक सेटिस्फाई किया क्या है? कौन सा वाला? बोलो बेटा. Definitely basic second condition is satisfied. बराबर है? Once basic second is satisfied, he'll become a resident. Then we look at what condition? Additional conditions. Additional कौन सा देखने को बोला आपको पहले मैंने? Second. ये साल छोड़ दो. ये पूरा मिलकर कितना हो रहा है? 8-10 days. बराबर है ना? वंडरफुल. तुम्हारा सेकंड एडिशनल में सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई हो गया. फर्स्ट कंडीशन क्या है? रेसिडेंट इन 2 out of 10. भाई साहब यहाँ पे जब 200 डेज है ये पक्का रेसिडेंट है. यहाँ पे 300 डेज है ये पक्का रेसिडेंट है. बाकी सब तो इतना स्टोरी पे मत करो आप. हो गया ना बेसिक फंडा? दिस स्टेटस विल बिकम डेफिनेटली ROR. So questions will come like this, where they'll give you days and ask you the residential status. If clarity is not there, we'll write whatever we want. If clarity is there, we'll do accurately, perfectly. Are we clear? Basic condition with section beta. Additional condition with section beta. Exactly. Did we get full clarity on this point? Yeah, sure. Proceed. क्या लिखा आप लोग लास्ट? मोनिश का एग्जाम्पल हो गया, फिर पॉइंट्स टू बी नोटेड भी लिखे ना आप लोग. चलो राइट वन पॉइंट ना. आप लोग पॉइंट्स टू बी नोटेड लिखे ना? पॉइंट्स टू बी नोटेड कितने पॉइंट्स लिखे? 4th पॉइंट लिखो. If an individual is a resident, is a what beta? Resident, then he is further classified into ROR and RNOR. ROR and RNOR. Provide ROR and RNOR. Full stop. Next point. A resident is regarded as ordinarily resident. A resident is regarded as ordinarily resident. A resident is regarded as ordinarily resident. A resident is regarded as what beta? Ordinary resident if
such individual satisfies, if such individual satisfies, if such individual satisfies both the additional conditions, if such individual satisfies both the additional conditions, both the additional conditions given under section 66, both the additional conditions given under section 66. Chalo beta, now please put side heading additional conditions under section 66. Please put a side heading additional conditions under section 66. So clear? Yeah. So clear with this part, everybody? Chalo, declare additional conditions. लिख लो दोस्त. Yes, Gagan, clear? मतलब कौन ऑपरेट करता है, मतलब कौन चेक करेगा? चेक कोई नहीं करेगा. इनकम टैक्स रिटर्न में हम दिखाते एक कॉलम है, हमको खुद को बताना पड़ता है हम रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है. आप बोल सकते हैं अगर हम गलत बताए तो उसको डाउट आया तो वो चेक करेगा. इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करेगा. आप ये पूछ सकते हैं वापस कैसे चेक करेगा सर? वो पासपोर्ट चेक करेगा. इन शॉर्ट, वो पासपोर्ट पे जब भी हम इंडिया छोड़ के जाते या इंडिया में आते तो इमिग्रेशन वाले स्टैम्प डालते, डेट ऑफ डिपार्चर भी लिखते, उस पर डेट ऑफ अराइवल भी लिखते. डिपार्चर अराइवल दोनों का स्टैंप होता है, तो उससे तो मालूम पड़ जाएगा ना कि ये भाई साहब आया कब गया कब. और अगर बाई चांस इनकम टैक्स को मालूम पड़ा कि ये रेसिडेंट है फिर भी नॉन रेसिडेंट दिखाया, पेनल्टी नॉर्मल नहीं रहेगा, फिर पूरा बैंड बजेगा इनकम टैक्स बजेगा. क्या वो सर्विस लिखते नहीं? हो गया लिखना, वेरी गुड. हो गया क्या लिखना बेटा? ठीक है, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया आपको मैंने. लिख रहे क्या अभी? अच्छा, ये भी लिखना है आपको? हाँ लिख लो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम. फ्रेंड्स डन? चलो, टेक दिस एग्जांपल आल्सो बेटा. क्या वो? कैन आई प्रोसीड? टेक आनंद एग्जांपल प्लीज.
Yes, done. Friends, can we proceed? Huh? Are we done, beta? So what are basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Barabar beta? And if satisfy anyone, what do you call the person as? Satisfied both. Satisfied none. Once you are resident, we look at what conditions? Given under which section? How many are there? What is the first one? He must be a resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. Beta clear hai? So additional conditions, we are not concerned with previous year. We are concerned with prior to the previous year. समझ में आ रहा है बेटा? सबको क्लियर है बेटा ये बात? चलो बेटा सुनो ध्यान से. Very, very important concept I'll teach you. Extremely important. Listen very, very clearly, friends. Listen. Sir, income. For this taxation purpose, we are dividing income into 2 types of income. That is Indian income, foreign income. Indian income means income which is accrued. What, my dear friends? Accrued or received or deemed to be received. What is this beta? Deemed to be received or deemed to accrue or arise. Deemed to accrue or arise in India. Chalo beta, what did I write? What is Indian income? Which is accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. This concept of deemed to be received is given by section 7. Deemed to occur or arise is given by section 9, which will take some sweet time to understand, which we are going to do it day after tomorrow. ठीक है ना बेटा? Because tomorrow we'll talk something else. After we complete something else, we'll come here. Clear है ना बेटा? कल क्लास है. Tomorrow we'll talk something else. So day after tomorrow we'll discuss section 7 and section 9. बेटा समझ में आ रहे? But बोलो इंडियन इनकम होता क्या है? Income which is accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. Clear beta? And foreign income means income which is accrued and received. Accrued and what beta? Outside India. So getting clarity? Now I'll ask you an interesting question. Think properly and tell me. Sir, Shiva Teja has taken a class in Pune. Okay? After class is over, I told Vinod sir, payment transfer करो आप. Then Vinod sir told, अरे शिवा बाद में दूंगा. ये बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ दुबई जा रहा हूँ सर. आपका दोस्त जो है सर दुबई में, मैं जब दुबई जाऊंगा उनको बोलना कि पैसे उधर दे देना. समझ में आया क्या? और विनोद सर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन दुबई एंड टोल्ड शिवा आ रहा नेक्स्ट मंथ, उनको इतना अमाउंट दे देना. ठीक है ना बेटा? I got money received in where? Dubai. Speak out. Is this income Indian income or foreign income? Speak out. क्यों? Accrued in India. Because income will accrue at a place where work is done. काम किधर करे भाई? इंडिया में. तो accrued in India. Received in Dubai. Still what kind of income? Wonderful. Next. एक क्लाइंट का काम आया दुबई में. मैं दुबई जाके काम करके आया. बट वो बंदा भाई साहब पैसे इंडियन अकाउंट को ट्रांसफर किया. सर वापस बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात. मैं दुबई गया, दुबई में काम किया और वो बंदा मुझे पैसे मेरे इंडियन एसबीआई अकाउंट को ट्रांसफर किया. This becomes an Indian income because accrued in Dubai but received in India.
अरे पैसे इंडिया को ट्रांसफर हुआ ना यार, दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? सर रिसीव्ड मींस फर्स्ट रिसीव्ड, वेयर इज इट फर्स्ट रिसीव्ड? इन इंडिया। दोस्तों यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सुनो यार, बहुत बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है यार ये, बहुत मजा आएगा, सुनो, लिसन वेरी क्लियरली। सर शिवा तेजा provided service, okay, to one person, Mr. A, who is in Dubai. Provided service to person, Mr. A, in Dubai. And I went to Dubai and gave service. Service is given in what? Dubai. Dosto, and this man transferred money to SBI account in India. What kind of income beta this is? This is definitely an Indian income. समझ में आ रहा है क्या? Next, Shiva Teja went to Dubai and given service to A. समझ में आ रहा है क्या? Speak out. This A fellow transferred money to SBI US. SBI US then transferred money to SBI account of Shiva Teja, which is in India. Well, what kind of income? This is definitely regarded as foreign income, because first transaction is only called as receipt. Second transaction is not called as receipt, it is called as remittance. First transaction is called receipt, second transaction is not a receipt, it is called remittance. It's a transfer, boss. But receipt where first? US. Boss. Accrued where? Dubai. I mean accrued outside India. Received where? What kind of income? Exactly. Getting clarity? Beta bolo. Everyone clear or not? Speak out, my dear friends. Get out a bull. हाँ बेटा, बट पैसे रिसीव किधर हुआ? इंडिया. तो फर्स्ट रिसीट इज वेयर? इंडिया. दैट्स कॉल्ड इंडियन इनकम. अरे हाँ भाई, बट फर्स्ट रिसीव्ड किधर है? दैट्स व्हाई वी ऑलवेज लुक एट फर्स्ट रिसीव्ड. सेकंड रिसीट इज नॉट कॉल्ड रिसीट, इट्स कॉल्ड रेमिटेंस. सेकंड रिसीट इज नॉट कॉल्ड रिसीट, इट्स कॉल्ड रेमिटेंस. अगर इंडायरेक्ट की हम बात करें तो बहुत सारा पैसा इंडिया को आता है इंडायरेक्टली. हर इंडायरेक्ट पैसे को टैक्स करेंगे बोल तो हो गया फिर. समझ में आ रहा ना बेटा? चलो, व्हाट इज इंडियन इनकम? बोलो भाई. accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. वापस. accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. What is foreign income? Accrued and received outside India. दोस्तों अपने को समझ में आया ना? इंडियन इनकम का मतलब, फॉरेन इनकम का मतलब समझ में आया? दोस्तों बोलो, अभी इनकम, इंडियन इनकम हुआ तो क्या होता? इनकम फॉरेन इनकम हुआ तो क्या होगा? ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना बेटा. फ्रेंड्स, स्पीक आउट. लिसन वेरी वेरी क्लियरली. वी लर्नड अबाउट 3 कैटेगरीज ऑफ पर्संस: आरओआर, आरएनओआर, एनआर. बराबर है ना बेटा? स्पीक आउट. लॉ टोल्ड दिस जेंट, थोड़ी देर पहले मैं बोला था ना, व्हाट विल हैपन इफ इज आरओआर, व्हाट विल हैपन इफ इज आरएनओआर. नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन. सर क्लियर है? ROR is taxable on Indian and foreign income. Technically, we say he is taxable on global income. Wherever you go, tax follows. Like Hutch dog. Vodafone, पता है ना आपने को? Vodafone was taken over by, Hutch was taken over by Vodafone. Before Vodafone, it was Hutch. पता है क्या? छोटू सा कुत्ता आता था. Person is walking. Behind one dog used to come. Small pug. You and I. देखे नहीं क्या आपको ऐड कभी बचपन में? Wherever you go, network follows. That is the logic. See, person keeps walking. A dog commits it back. And they give a music saying that wherever you go, network will follow. ठीक है, छोड़. अभी जोक फ्लॉप हो गया, छोड़ दो. अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना? Wherever you go, tax will follow. आधे लोग कुत्ता कोने में याद करने की कोशिश कर रहे हैं. छोड़ना भाई, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना यार. चलो, क्लियर है क्या? R1 is taxable on what income?
इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। थोड़ी देर पहले जब आर का आंसर है सब लोग खुश हो गए, वाह यार रे। अब एक बार आर हो गया भाई तेरी तो बस। Once you are ROR, you are taxable on what income, beta? Global income. Whether Indian income or foreign income. Both will tax it, boss. Both will tax it. What will tax? Both. Concentrate. Focus. Good morning. Come on. ROR is taxed on what income? Both kya? Both. Kya hai both? Both Indian income and foreign income. Nothing but global income. Enough. Taxable only on, obviously. उसको फॉरेन बोलेंगे तो वो चप्पल लेके मारेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई ये सेटिस्फाई नहीं किया बेसिक कंडीशन, जो फॉरेन में बैठा है, नॉन रेसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, डेविड वार्नर, एग्जांपल आपको याद है तो, ये बंदा गया न्यूजीलैंड, मैच खेला न्यूजीलैंड में, पैसे कमाए न्यूजीलैंड में, इंडिया वाला फोन करके बोल रहे भाई तू इधर टैक्स पे कर। समझ में आ रहेगा? चाह चप्पल लेके मारेगा। बट डेविड वार्नर इंडिया में आया, इंडिया में कुछ एक्टिंग किया, किंगफिशर एड में एक्ट किया, उला ला ले वो टैक्स बिल। सर समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज दैट इनकम बिकेम व्हाट इनकम? इंडियन इनकम अक्रूड इन इंडिया। तो आपको ये समझना है, ये जो फॉरेन प्लेयर्स जो इंडिया में आके आईपीएल मैचेस खेल रहे ना बॉस, आईपीएल से जो पैसे इंडिया में कमा रहे भाई टैक्सेबल। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है मैं बोलूंगा, सुनो। शिवा तेजा इज ROR, एग्जाम्पल नहीं, फैक्ट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ROR ओनली। अरे शिवा तेजा इज ROR, went to US, provided service in US, received money also in US. Now tell me what kind of income? अरे बोलना भाई ऐसा मतलब accrued in US, received in US, accrued, received, ठीक है, accrued in US, received in US. What kind of income? Foreign income, ठीक है ना, foreign income ही है ना। अरे बोलना बेटा यार, एक दो लोगों का चेहरा है ऐसा भूख लग रही है ऐसा दिख रहा है, बट बाकी लोग मस्त कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यार मुझे भी भूख लग रही है यार, कॉन्सेप्ट का इतना भूख है मुझे यार, सुनो यार ध्यान से, कम ऑन यार प्लीज, बीच में यार कॉन्सेप्ट में ब्रेक नहीं दे सकता अभी, रुको 5-10 मिनट आप लोग। चलो मैं क्या बोल रहा, कहां पे था मैं? यूएस, हाँ मैं गया ना यूएस, एग्जैक्टली। अक्रूड वेयर? यूएस। रिसीव्ड वेयर? यूएस। व्हाट काइंड ऑफ इनकम? एग्जैक्टली फॉरेन इनकम है। और शिवा तेजा का स्टेटस क्या है? मैरिड, पता है मुझे, एग्जैक्टली। हाँ बोलो स्टेटस क्या है? ROR। इज इट टैक्सेबल? बोलना भाई, 100% टैक्स, उससे कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है क्या? इंडिया वाला बोल रहा है शिवा तेजा, यू प्लीज पे टैक्स इन इंडिया बिकॉज यू आर ROR। यूएस इज टेलिंग प्लीज पे टैक्स इन यूएस because you made money in US. But it's always a thumb rule that you'll never pay tax in two countries. For that, my dear friends, India has signed agreements with more than 120 countries. We signed agreements called double tax avoidance agreements. In short, it is called DTAA. Double tax avoidance. ये केस में हम टैक्स करेंगे, ये केस में आप टैक्स करो, ये केस में आप करो। कौन से केस में कौन करेगा? CA फाइनल। समझ में आ रहा है कि आपको क्या पढ़ने वाले? बट जब CA इंटर में है, चुपचाप आपको यही पूछेगा, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट? यू व्हाट इज योर आंसर? यस। यू शुड नॉट टेल यूएस ऑल्सो टैक्सेबल, 2 बार टैक्स नहीं आ रहा है, मुझे फीलिंग्स इमोशंस बहुत आ रहे, कंट्रोल। सर क्लियर है ना बेटा? But it's always thumb rule, you know, never pay tax in two countries. The reason I told you that because some student will come back to me in the break, or will come back to me after class, or will come back to me in the night मतलब after costing class, and come to me and tell, sir मुझे एक डाउट आया, 2 जगह थोड़ी ना टैक्स पे करेंगे सर। तब मैं बोलूंगा उसको, नहीं बेटा 2 जगह टैक्स पे नहीं करते, एक की जगह पे करते। उसके लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया 120 कंट्री के साथ, और उसका रिलीफ मिलेगा। कैसे रिलीफ मिलेगा? फाइनल में आप पढ़ेंगे आप लोग। CA final will understand how will relief be given by India. Just to give you knowledge, in double tax agreements there are points written which says that आप यूएस में जाके टैक्स पे करें ना, वो इंडिया वाले क्या कैसा बेनिफिट दे रहे बोलो, जो आपको इनकम आया इनटू इंडियन टैक्स रेट कैलकुलेट करो, उसमें से जो फॉरेन में टैक्स पे करे वो माइनस करो, बाकी फिगर पॉजिटिव आया वो बाकी हमको पे करो, नेगेटिव आया तो ठीक है छोड़ दे, रिफंड कुछ नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट है, एक बार गया। समझ में आ रहा है क्या? Anyways, all that is there for you in CA final, not in inter.
Inter-level, our objective is only to understand whether it is taxable or not taxable. Don't get emotional. Two countries will not pay tax and all. Sir, आपको समझ में आ रहा है क्या? Since morning, I was taking so much effort and time with you guys to make you understand who is ROR, RNOR, NR. But did you understand the purpose why I made you understand who is ROR, RNOR, NR? Because if you're ROR, your taxability is different. NR, your taxability is different. बीच में एक बंदा बैठा है, नमूना है वो ना ये है, ना वो है. Somebody asking doubt. Sir, as you said, cricket is professional game. So it is also taxable. Yes, already बोल दिया ना. Sir, what about countries with which India does not have such agreement? Good question. There are some countries with which India does not have agreement, like India, Czechoslovakia. ऐसा एक country है. Czechoslovakia and all. Some countries, India does not have agreements. In that case, how to calculate relief? That is also there in CA final. Relief will come. Because it is always a thumb rule. दो जगह आपसे टैक्स पे नहीं कराएंगे भाई. हम लूटते हैं आपसे, मना नहीं कर रहे. But इतना भी हम बुरे नहीं कि दो जगह आपको टैक्स पे करने को बोलते. बराबर है ना? हम बराबर लेते हैं आपसे. अगर उधर थोड़ा कम लिया आपसे, बाकी हम उठा लेंगे. उधर ज्यादा दे दिए, ठीक है ना भाई, जान दे, इसको ऑलरेडी बहुत लगे. और क्या लेंगे उससे? सर, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? आई थिंक योर डाउट इज आंसर माय डियर फ्रेंड. हाँ तो बोलो ना यार, ये तो रिको. ठीक है सर, क्लियर? समझ में आया क्या? एक मिडिल वाले बंदे की बात करते और खत्म करते इसको, फिर ब्रेक लेते हम. ठीक है, ब्रेक के बाद लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कॉन्सेप्ट खत्म करना है, बीच में नहीं छोड़ सकता हम. ये एक क्रेजी फेलो है. क्या नाम है इसका? आरएन. दिस फेलो इज टैक्सेबल ऑन इंडियन इनकम and Indian income and foreign income in two cases. Come on, he's taxable on what income beta? Indian income and foreign income in two cases. What are the two cases? That is important. Case number one, business income. What income beta? Business income which is controlled wholly or partly from India. Business income which is controlled wholly or partly from where beta? India. मतलब फॉरेन में कुछ बिजनेस है पर उसको कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से. सर, क्लियर है एवरीबॉडी? नंबर 2, शिवा तेजा's example. This is professional income where there is setup in India. Setup in India means having a fixed place of office in India. Shiva Teja has got an office in Hyderabad. So I've got an office, fixed place of setup in India. So getting my point, everybody? Come on, guys. In case of RNOR, what is the answer? Bolo beta. 1 second. Chalo, what is that I was talking about? ROR, RNOR, NR. ROR, what will happen? Taxable on both Indian income and foreign income. NR, only on Indian income. RNOR, Indian income and foreign income in two cases. बोलो बेटा, दो केस क्या है? Business income, which is controlled wholly or partly from India. Professional income, which is set up in. Exactly. Getting clarity, everybody? We'll take a lot of examples on this concept. Okay, that will take some time. ठीक है ना बेटा, समझ में आया यहाँ तक? बोलो बेटा. Indirectly, if I have to tell one language, you tell correct or not. If an income is Indian income, it doesn't matter whether you are ROR, RNOR, NR. We are definitely going to tax you. बराबर है? What is Indian income? Which is accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. Clear? Take a break. After break, we'll talk more. Thank you.
भाई चिप्स पैकेट का है. Okay. We had long break. Over now. Get back. आप लोग कहाँ तक लिखे बेटा? एडिशनल कंडीशंस तक हो गया ना? ये इनकम लिखना बाकी है ना अभी? ठीक है, लिखो मत, रुको अभी. चलो, get back guys. Friends, are we ready? Chalo, enough of long break what we had. Let's continue. Come on, proceed. Not long, little long only. ठीक है, understood. Even if I get 2 hours also, you will tell थोड़ा ही हुआ sir. अभी और 1-2 घंटा चाहिए. चलो, proceed. Come on guys, what is section 6.1? Basic condition. बोलो क्या basic condition? क्या इतना रोते बोल रहे यार? अच्छे से बोलो ना यार. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. बराबर है? What additional conditions? Which section? बोलो. He must be a resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. Second additional condition. He must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. Beta clear hai? Chalo beta, come on. So friends, I was teaching you the concept of income, and under income tax law, for the purpose of taxability, income is divided into 2 types: Indian income and foreign income. What is Indian income? Which is accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. Foreign income is that income which is accrued and received both outside India. Clear beta? Now how do we tax this ROR, RNOR, NR? We'll discuss a lot of examples, but we understood the concept very clearly that in case of ROR, both Indian income and foreign income, both are taxable. NR, only Indian income, only foreign income. ऐसा बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा? चप्पल लेके मारेगा. NR, what is the answer? Only Indian income. RNOR, both क्या both Indian income and foreign income in 2 cases. बोलो भाई 2 cases क्या है? Business which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is profession which is set up in India. Correct, no? Everybody? Sure. Other way around. Let me write it different way. पता है मुझे, थोड़ा पढ़ाना बाकी है, उसके बाद देखेंगे. Yeah. Once an income is Indian income, ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ अभी तक. Once an income is Indian income, what will happen बेटा? Taxable for all. और मतलब global income, Indian income and foreign income. कुछ भी बोल रहे. और मतलब ROR, RNOR, NR. अरे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया ना यार. बेटा समझ में आया क्या मैं क्या बोला? मैडम आपको समझ गया ना आप क्या बोला? प्लीज, थैंक यू, वेलकम. हाँ, थैंक यू सर. नेक्स्ट, अदर साइड, व्हाट इनकम? बोलो बेटा क्या है आंसर? ROR टैक्सेबल. अरे रुकना भाई. NR नॉट टैक्सेबल. RNOR only in 2 cases it is taxable. क्या है बेटा 2 cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. बेटा बराबर है? Let's take some examples and get complete clarity. ठीक है? Now let us say example number 1. There is a person, Mr. Shiva Teja. I went to Dubai and I provided service in Dubai. Service in Dubai. ठीक है बेटा? And
payment is received in Dubai. अरे मैं दुबई बोल के इंडिया क्यों लिख रहा हूं यार, इतना प्यार हो गया इंडिया से यार. पेमेंट इज रिसीव्ड इन दुबई. कंट्रोल शिवा इंडिया, रिलैक्स. चलो क्या लिखा मैंने? आई वेंट टू दुबई, प्रोवाइड सर्विस इन दुबई, पेमेंट इज रिसीव्ड इन. इज इट टैक्सेबल फॉर शिवा तेजा? कैसा मालूम तेरे को टैक्सेबल? यू नो माई स्टेटस? यस सर. क्या है मेरा स्टेटस? आर ओवर. हाउ डू यू नो? मैं बोला क्या? अच्छा क्वेश्चन में आया तो क्या बोलेंगे? क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आर ओवर. ओ मेरे भाई, क्वेश्चन साइलेंट है तो तुमको बताना पड़ेगा. आर ओ आर है तो ये होगा, आर एन ओ आर है तो ये होगा, एन आर है तो ये होगा. समझ में आया क्या? अब मुझे बोलो इस केस में आंसर क्या है? इफ शिवा तेजा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज इट? एंड लेट मी टेल यू, शिवा तेजा हैज गॉट वन सेटअप इन इंडिया. दैट मीन्स एन ऑफिस इन इंडिया. बेटा बराबर या नहीं? ठीक है. अब बोलो बेटा इसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? इफ शिवा तेजा इज आर ओ आर, नो डिस्कशन, straight away answer is taxable. R and OR. What if Shiva Teja is NR? बोलो भाई. If Shiva Teja is NR, it becomes not taxable. Why beta? Foreign income. Let me tell you my dear friends, this whole concept whatever I taught you just now with regard to who is taxable when, आर है तो क्या होगा, RNR है तो क्या होगा, NR है तो क्या होगा, all the story is given by section 5, which deals with the concept of scope of total income. Scope of, which clearly says when a person is taxable. ROR है तो क्या होगा, RNR है तो क्या होगा, NR है तो क्या होगा. समझ में आ रहा है क्या? The moment we started the class today morning, we discussed very clearly. I told you the point. ROR है तो क्या होगा, RNR है तो क्या होगा, NR है तो क्या होगा. We will talk in detail. Did you understand the point, everybody? समझ में आया क्या? एग्जाम्पल आपको. What is section 4? Section 5. 6(1), 6(6), Section 7, वो 2(7) है. Section 7 is income deemed to be received in India, जो पढ़ाना बाकी है. समझ लिया? SSC. 10(1), agriculture income is exempt. बराबर है ना? Good. 56(2)(10), Section 4, Section 5. सब बराबर है ना? If you're ROR, what will happen? Global income. RNOR. Indian income taxable, foreign income in 2 cases. NR. Indian income is taxable. सीधा क्या नॉट टैक्सेबल बोल रहा भाई? अच्छा ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं क्या? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है. लेट अस से there is one of our friend, Mr. तो सबका नाम क्या है? तुषार कपूर. One of our friend Tushar, he has got one palace in UK. He has got one palace in UK, and this palace in UK he gave it on rent. He gave it on rent to Mr. इसको देंगे भाई अंबानी. बहुत ही ज्यादा हो गया. ठीक है. He gave it on rent to Mr. विजय माल्या. Oh my God. अब वो तो उधर ही है. Let's say he gave it on rent to Mr. Modi. Okay? No emotions. Not every Modi is Narendra Modi. Not every Gandhi is Rahul Gandhi. He gave it on rent to Mr. Modi, and the rent is 10,000 pounds. 1 pound is 100 rupees बेटा. 10 लाख हो गया ये. इतना क्या कैलकुलेट कर रहे? 1000 into 100 भी कैलकुलेटर में चेक कर रहे. टू मच हो गया ये. आज का जमाना बच्चे ऐसे हो गए. 63/3 कैंसल 6.
1 2 फ्रेंड्स आर थिंकिंग हम यही करे थे. ठीक है, चलो. Palace in UK get on rent, and this rent is, my dear friends, received in UK. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? अब बोलो, तुषार इज ROR. बोलो, तुषार इज NR. तुषार इज RNOR. Speak up, beta. Wonderful. Answer is not taxable because this. What is the nature of this income, beta? Foreign income. And once income is foreign income, RNOR is taxable only in 2 cases. Bolo beta, 2 cases क्या है? Business income, which is controlled wholly or partly from India. Professional income, which is set up in India. Is this business income? Is this professional income? This is only what income? Rental income, foreign income. Oh, house property. It comes on house property, no sir. यार बेटा बोलो ना यार. तुषार भाई, क्या है तू? ROR पक्का ना? वंडरफुल. तो क्या होगा ROR है तो? Taxable. Straight away. Sir, clear everybody? All of us. ये कौन सा समझ में आ रहा है कि सबको? ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क एग्जाम में आते हैं. बट 8 मार्क को जो एग्जाम क्वेश्चन में आएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसमें 7-8 पॉइंट्स they'll give. For every point we have to tell what is the answer. इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है. ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, देन विल स्टार्ट राइटिंग. ठीक है? RNOR में इंडियन इनकम रहेगा तो फिर सब सारे हेड में टैक्स. ऑब्वियसली मैं इंडियन इनकम दिया ही नहीं ना, फॉरेन इनकम दिया ना. उसमें से फॉरेन इनकम में वो 2 केसेस रहेंगे. ऑब्वियसली. सर है ना, मतलब उसका बिजनेस ही रेंट पे देना है. No, still rental income is taxed in house property only. Rental income is always taxable in house property. क्या भाई, आपको भी रेंट पे चाहिए क्या? आपको 10% डिस्काउंट देता हूं. ठीक है. One more example. Listen carefully here. Listen. Tushar is done. Your good name I forgot. Monish. Gagan. थोड़े लोगों का नाम पता है अभी और बहुत लोगों का नाम बाकी है. दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अनिरुद्ध. अरे ये टॉप म्यूजिशियन है यार हमारे पास साउथ में. हाँ, वंडरफुल. टॉप म्यूजिक डायरेक्टर. आप जितने भी म्यूजिक पे डांस करते हो वही म्यूजिक कंपोज करते हैं. ठीक है. कैन आई प्रोसीड? लिसन, देयर इज वन पर्सन, मिस्टर अनिरुद्ध. This gentleman, he has got one business. Business in US. ठीक है ना बेटा? Very business US. And this business in US is owned by Anirudh. ठीक है? And 60% is controlled from India. ये एग्जाम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बेटा. मतलब मैं थोड़ा मसाला ऐड करूंगा उसमें. 20% is controlled from Pakistan. 10% is controlled from Afghanistan. Balance 10% is controlled from Kazakhstan. क्या बड़ा आदमी है यार ये अनिरुद्ध. पाकिस्तान से कंट्रोल कर रहा है, अफगानिस्तान से कंट्रोल कर रहा है, कजाकिस्तान से कंट्रोल कर रहा है. वो क्या बिजनेस है नहीं पता. Sir, clear? Sir, getting my point, everybody? And this business is in US, which is obviously income will accrue where, sir? US. Obvious common sense की बात है. And received also in US. ठीक है ना बेटा? What is the nature of this income? Without any second thought, foreign income. सर आपको आज का क्लास समझ में आ रहा ना बेटा? हम लोग पहले क्लासिफाई करेंगे इसका ROR, RNOR, NR क्या है, वो कैसा क्लासिफाई करना समझ गया हम लोग. ठीक है ना? ROR है तो क्या होगा, RNOR तो क्या होगा, NR है तो क्या होगा, वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है ना? अब मुझे बोलो ये अनिरुद्ध का कहानी क्या होगा, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, हम आंसर करेंगे. ठीक है ना बेटा? अज्यूम करो केस नंबर 1 अनिरुद्ध ROR है, बिना कुछ बात करे टैक्सेबल. NR है, बोलो बेटा, नॉट टैक्सेबल. बोलो बेटा. एंड इमेजिन दिस बिजनेस प्रॉफिट इज 1 crore. पॉइंट समझ गया ना बेटा? फर्स्ट केस में टैक्सेबल है. कितना टैक्सेबल है?
1 crore is taxable. प्रॉफिट 1 crore है भाई. रेट थोड़ी पूछा, कितना टैक्सेबल है पूछा मैंने. 1 crore. NR नॉट टैक्सेबल. आर एंड नो आर क्या बेटा? टैक्सेबल. क्यों? बिजनेस इज कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया. अब क्वेश्चन ये है कि टैक्सेबल कितना? स्पीक आउट. फैंटास्टिक. Absolutely wrong answer. Answer is 1 crore. Law told whether it is controlled wholly or partly, it is taxable. Law never told if it is controlled partly is taxable. ऐसा बोले क्या कभी? बोलना मेरे भाई. In exam they asking question like this. Students are writing 60% is control of India, 60% is only taxable. Balance from Pakistan, Kazakhstan, दूसरा क्या? Afghanistan. Sir, clear no? Don't write all that. Even if it is partly controlled, still full amount is taxable. Imagine reverse case, only 10% control from India. Still full amount is taxable. Partly doesn't mean 50-50. यार बोलो समझ में आया ना? Partly doesn't mean 50-50. Getting clarity everybody? थोड़ा भी मिला तो partly मिल गया. 1% is also partly only. But 1% भी 1% भी इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में. समझ चलेंगे. और टू मच हो गया ना तो मत कर भाई कंट्रोल इंडिया से. अगर तेरे को टैक्स का इतना परवाह है कि मत कर. बी स्मार्ट. समझ चले. अगर उसको स्मार्ट नहीं है, उसको नहीं मालूम, तो सीए को कंसल्ट करो. हम किसके लिए बन रहे सीए? अरे यार सीए बन के क्या करना है यार? शादी करने हैं यार. वी आर गोइंग टू गेट सम ग्रेट नॉलेज, राइट? And to implement the knowledge practically. People give us respect because of knowledge what we carry. Simple, no? If somebody tells, I don't know, we'll not keep quiet. For example, client is coming to me and telling, sir, file my income tax return. मैं बोलूंगा 10,000 फीस. वो बोलेगा 10,000 क्यों सर? 2,000 में ऑनलाइन में हो रहा है. तो कर ले भाई. बोले नहीं सर आप ही करो, 2,000 में करो. बोले भाई तू एडिडास शॉप में गया, 2,000 का जूते, तू 500 में नहीं पूछ सकते. देखो 500 का जूते चाहिए, 500 की दुकान में जा. You came to Adidas store. Chartered accountants. You cannot ask for 2,000. We'll charge 10,000. Is a fees for the knowledge what we carry. Yes or no, beta? Getting clarity, everybody. Speak out. No doubt about it. Client cannot tell. क्यों मतलब है भाई सीए 4-5 साल का मेहनत है, लाइफ में बहुत छोड़े सीए बनने के लिए. हाँ, we have sacrificed a lot of things. He doesn't know what is our opportunity cost. Correct? No, there is a lot of implicit cost. There is so much of explicit cost. Ultimately, there is an opportunity cost. करेक्ट ना बेटा? आज आप लोग इधर बैठे मतलब कहीं और बैठे नहीं ना. क्या बोला? ठीक है, कुछ तो बोला, समझ गए ना आप लोग? ठीक है ना यार? क्लियर है ना? Exactly, boss. We are sacrificing a lot of things in our life and sitting like this, boss. There is definitely a price for it. सुने ये वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, बोलो बेटा क्या डाउट है? पाकिस्तान वो लोग भी टैक्स लगाएंगे क्या? हाँ लगाए तो लगाए, प्रॉब्लम क्या है? आपको ऑलरेडी मैंने बताया 2 जगह तो टैक्स पे करने का तो सीन ही नहीं है. इंडिया को एग्रीमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज. आपको इंटर लेवल पे इतना ही क्वेश्चन में पूछते कि टैक्सेबल है या नहीं है. आप इतना ही बोलो टैक्सेबल है. आप ये मत बोलो पाकिस्तान में भी टैक्स पे करेगा, अफगानिस्तान भी भरेगा, कजाकिस्तान भी भरेगा. 20 उधर गया, 10 उधर गया, 10 इधर गया. इधर भी कुछ होना चाहिए ना, हमको भी कुछ फायदा होना चाहिए ना. नो फीलिंग्स एंड ओनली सेक्शंस एंड नो डाउट अबाउट इट बॉस. आर वी क्लियर? मजा आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? अंदर ब्रो ब्रिलियंट. क्या हुआ? कैन आई प्रोसीड? शैल वी स्टार्ट राइटिंग? हाँ बहुत हो गया, लिखेंगे अभी. क्या लिखे आप लोग? लास्ट क्या कर थे? एग्जाम्पल. बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ा है यार. ये आनंद किधर है? हाँ ये वाला. ठीक है. नाउ प्लीज पुट साइड हेडिंग स्कोप ऑफ टोटल इनकम. Please put one side heading scope of total income. I will tell some points, write that first. Scope of total income. Bracket section 5. Section with section 5. What is 4? What is 3? Section 4. Section 5. 87E. 288B. Tax.
बी पूछा मैं तो ए बोला, ठीक है ना? His inside feelings and emotions. My answer is correct, sir. Your question is wrong. Continue. First point. Right on the first point. After determination of residential status, after determination of what beta? Residential status, comma. After determination of residential status, comma, taxability of income, taxability of income is an important criteria. Taxability of an income is an important criteria which is based on which is based on whether income is Indian income, which is based on whether income is Indian income or what better? Foreign income. Whether income is Indian income or foreign income. Is that clear, friends? Below, take this table first. Indian income, foreign income. Yes, sir. Said done? Yes, sir. Everybody. Chalo beta. What are two types of income? Indian income and foreign income. Correct, my dear friends? Indian income means what? Income accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. Deemed to be received concept is given by section 7. Day after tomorrow we'll talk. Deemed to occur as in India, section 9. That also we'll talk day after tomorrow. Foreign income means what? Accrued and received both? Wonderful. Take this, come on. Very, very important. Heading for this, same section 5 scope of total income only. In that only it's there. There's a part of section 5. It's a part of scope of total income only. What is that? लिखे ना हम लोग एक जगह पे ऑलरेडी.
अच्छा everywhere you wrote ROR only. Resident and ordinarily resident. See, ordinarily means usually, generally. Correct, right? ROR RNOR NR चलता है, बट एक बार लिखना है. मतलब पूरा क्वेश्चन में अगर 10 बार लिखेंगे हम ROR, ये क्वेश्चन जब आंसर लिखेंगे एक बार रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पूरा लिखो, उसके बाद वन टाइम यू राइट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ब्रैकेट में लिखो ROR, उसके बाद आप कंटिन्यू करो ROR. So basically मतलब indirectly we are trying to define saying that boss ROR means resident and ordinarily resident. मैंने एक बार लिखा, ब्रैकेट में बता दिया आपको ROR है, बाकी जगह मैं वो यूज करूंगा. It's as good as showing an acronym. क्या हो बेटा? Resident but not ordinarily resident. Or resident and not ordinary resident. Ordinarily. क्या हुआ दोस्त? क्या बोल रहे हैं? हो गया दोस्तों? Can I scroll it? Yes. क्या बेटा, क्या जो कि हमको ही बोला ना यार, हम ही हंसेंगे. ऐसे अकेले अकेले थोड़ी हंसते यार, हमको नहीं बोल सकते क्या जो कुछ नहीं है, ऐसे हंस रहे. अरे बिना जो का हंसते तो पागल समझते, ऐसे थोड़ी हंसते यार. हो गया क्या? ठीक है, ये भी लिख लो भाई वापस, रिवर्स वे टू अंडरस्टैंड. समझ गया ना सर? ऊपर जो लिखे वही कॉन्सेप्ट है, बट इन अदर वर्ड्स इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल. फॉरेन इनकम ROR इज टैक्सेबल, NR is not taxable, RNOR is taxable only in two cases. क्या है बेटा वो two cases? Business income which is controlled wholly or partly from India. Professional income which is set up in India. Yes, Mr. Sarvesh, are we clear? क्या तुषार कैसा लग रहा है? पैलेस कैसा है? हो गया क्या? नहीं, अब हो गया. Yes, my dear friends. Next, take example 1. Example 1. One important announcement to online students. Guys, from tomorrow, we are not going to have it on YouTube. We'll have it on our expert app. So please install the expert app. Any technical issues, connect with our technical team. So from tomorrow, class won't be on YouTube. It will be on expert app only. Please make a note of it. और YouTube पे जो भी देख रहे भाई, please yes बोलो, so that I'll understand that you understood.
एक बच्चा नहीं बोल रहा यस, कंजूसी करते यार। क्या बोल रहे? फाइनली अभी बोल रहे सब यस यस। हाँ वही समझ गया, अभी रियलाइज किया। कोई भी टेक्निकल इश्यूज है ऐप पे तो प्लीज कनेक्ट कर लो एक्सपर्ट ऑफिस से, आपको हेल्प कर देंगे। कल से यूट्यूब पे नहीं होगा, कल से ऐप पे ही होगा। हो गया इतना जल्दी, क्या बात है यार। कैन आई प्रोसीड? डन विद शिवा तेजा स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी, एग्जाम्पल 2। सर आपका एवरी एग्जाम्पल हैज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू प्रोफेशनल, second example related to house property, third example is related to your business control wholly or partly from India. Don't think that तीन तीन एग्जाम्पल क्या लिखेंगे सर, एक लिखेंगे बस हो जाएगा, नहीं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से लिखो। यस बेटा, नॉट टैक्सेबल, नॉट। Still tax in house property only. Still we will tax in house property only. मतलब same story only will apply. Because we have got heads of income, no? So if a person business is only giving rent, still we will tax in house property only, not in PGBP. जो फिर होटल्स में जो रूम हम लोग बुक करते हैं वो फिर उसमें चला जाएगा। वो बिजनेस इनकम है, वो रेंटल इनकम थोड़ी है। उसमें भी तो सर रेट पे ही मतलब देता है ना फिर। हाँ, महीने का रेंट लेके देते क्या रूम्स उधर? दैट इज अ होटल बिजनेस, राइट? होटल बिजनेस अलग है, आप रेंट को देके वो बोल रहे कि मेरा बिजनेस ही रेंट देने का है, ऐसा थोड़ी है, दोनों में फर्क है ना। दैट इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड टू रन द होटल बिजनेस। आप एंटिटी बनाए क्या कुछ बिजनेस करने के लिए सिर्फ रेंट पे देने का? फर्क है ना बहुत। होटल में जो रूम रेंट मिल रहा है वो रेंटल इनकम बोलेंगे क्या? व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज होटल रूम रेंट इनकम सर? बिजनेस इनकम, correct? No, that cannot be called rental income. But if Shiva Teja, I've got 3 properties, all 3 properties I'm giving on rent, can I say that business is giving property on rent and a business income? No, that's pure rental income. बराबर है ना बेटा? Example 3, Anirudh, I mean take it.
दोस्त. Sir, done? Friends, finished writing? Friends, yes or no, are we done? Chalo beta, please put one side heading, points to be noted. I'll tell you 2-3 interesting points. Please write them. Points to be noted. Yeah, point number 1. Taxability of a person. Taxability of a person will depend upon 2 factors. Taxability of a person will depend upon 2 factors. Taxability of a person will depend upon what, beta? 2 factors. That is residential status and the place of accrual or receipt of income. समझ में आना बेटा? The place of accrual or receipt of what, beta? Income. Place of accrual or receipt of income. Friends, is this point clear for everybody? Next point. Receipt is different. Receipt is different from remittance. Receipt is different from remittance. Full stop. Continue. Receipt refers to the first receipt. Receipt refers to the first receipt. Receipt refers to the first receipt. And remittance means subsequent transfers. Remittance means what, beta? Subsequent transfers. दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? Everybody getting clarity or not? Come on, please reply all of us. Pakka, my dear friends. Chalo. So friends, we understood the concept of how do we determine the basic condition, how to determine additional condition, and how do we classify individual as ROR, RNOR, NR. Did we get a complete clarity on this? Tell me better, what are the basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Correct, my dear friends? Everybody? Then, what is the story of additional conditions? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of 730 days or more during the 7 years preceding the previous year. Getting clarity? Yes, sir. If person becomes ROR, what will happen? Taxable mat bolo, taxable pura bolo, taxable on Indian income and foreign income. If he becomes NR, taxable only on Indian income. ऐसा बोलो ना, taxable on Indian income. If he becomes RNOR, taxable on Indian income
and also foreign income in two cases. क्या है बेटा two cases? Business income, which is controlled wholly or partly from India. Profession income, which is set up in India. I think we got tremendous good level of clarity on this concept, my dear friends. Are we all clear, Pakka? Everyone? Next. Let's complete one more small thing today. Okay? Listen very clearly. Sir, there is something called HUF. It takes just 5 minutes to close. खत्म कर देते हैं इसको. ठीक है ना बेटा? HUF concept is given by section 6.2 and section 6.6. 6.6 याद है ना बेटा? क्या है 6.6? Same like individual. बराबर है ना? Right. Listen. HUF, what they told is, if control and management. Sir, HUF पता है ना? HUF मतलब? Oof, I am very good. Hindu undivided family. If the control and management is wholly or partly in India, partly could be 1% also. Wholly or partly in India, we call it as resident. So, getting clarity? Other side. If control and management, what better? Control and management is wholly outside India, then we'll call it as what beta? Come on beta, if control and management is wholly or partly in India, what do you call it? Resident. Wholly outside India. Simple concept beta. And just to give more knowledge to you, in control there are two types of control. De jure control, de facto control. I'll write the words. DEJURE. That's called de jure control. Other one is called de facto control. ये Latin words है. इसका meaning क्या है मैं बोलता हूँ सर. De jure control means who is supposed to control. De facto control means who is actually controlling. Classic example, generally in a house, who is supposed to control his father. But बच्चों, boys, tell me, who actually controls? अपने को चाहिए तो सीधा पापा के पास जाते क्या? अपने पास है ना एक रूट, ऐसा जाके ऐसा जाएंगे, पूरा काम हो जाता है उस रूट में. ये रूट में गए तो कुछ भी नहीं मिलता, दूसरा मिलता. Sir, even today, even after so many years, I still, if I want to discuss something, I still talk to my mother only. And tell पापा को बोलो. Next day मान गए लास्ट बोले क्या? बोलते नहीं. अरे बोलो पहले. सब बराबर है ना सर? I mean, because I'm sure we guys know that for every boy, mother is the first love. Correct no यार, उससे precious क्या है? बाकी सब ठीक है, आएंगे जाएंगे, कहीं बोल सकते हैं कुछ भी, ये तो परमानेंट है. ठीक है, coming back, emotions छोड़ दो. कौन सा समझ में आया क्या? So what is important? What are the two types of control? Is called de jure control, de facto control. De jure means who is supposed to control. De facto is actually controlling. Income tax law is telling we are concerned about de facto. Who is actually controlling? किसको कंट्रोल करना चाहिए, उससे क्या लेना देना है भाई? जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं उससे इंपॉर्टेंस है ना अपने को. अरे बराबर है या नहीं यार? सर yes or no boys, tell me please. We will not talk to our father generally when we want to ask something. We generally talk to mother only, no? Because we know that there is de facto control there only. मम्मी बोले मतलब हो गया. गर्ल्स आप लोग मम्मी डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट पापा. ठीक है. एनीवेज, फन सेट. डिड वी गेट क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट? सिचुएशन, दोनों का चेहरा देखेंगे पहले, फिर डिसाइड करेंगे किससे पूछना, और ये भी सोचिए कब पूछना चाहिए. फाउंडेशन पास हो गया, अभी पूछ सकते हैं. चलो. सो इफ द क्या मतलब, जो पूछना है पूछ रहे भाई. So if control and management is wholly or partly in India, what do you call it? Resident. Wholly outside India. If it's a resident, we'll further classify into ROR, RNOR. What is ROR full form? Resident and ordinarily resident. RNOR. Resident but not ordinarily resident. This you have to satisfy 6 conditions. Both. Any one or none. समझ में आ रहा है क्या? And this 6 who must satisfy is कर्ता must satisfy.
सर 6166 है वो, ये 6266 है, एडिशनल सेम स्टोरी है. क्या है सेम स्टोरी? 2 out of 10. दूसरा क्या है? 730 इन लास्ट 7 years. बराबर है ना? सेम पॉइंट ही तो है, बट बेसिक चेंज होगा. बेसिक क्या है? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होनली और पार्टली इन इंडिया, कॉल इट एज रेसिडेंट. If control management is only outside India, call it as what? That's it. Basic condition is different. Additional is still the same. दोस्तों क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? ये डिफिकल्ट है क्या कुछ भी? बिल्कुल नहीं यार. इंडिविजुअल में इतना टाइम स्पेंड करे, ये क्या है? कुछ भी नहीं. जुजू मतलब छोटू, टाइम पास, लिंबू टिम्बू. समझ गया ना? लिख लो. So if control and management is wholly or partly in India, क्या बोलेंगे बेटा? Resident. If it's wholly outside India, बेटा हो गया? आर वी डन? So what is section 6.1 for individual? 6.6 additional conditions for individual. 6.6 I asked. Additional conditions for individual. HF कौन सा section है? 6.2 and 6.6. 6.6 is same, but basic is slightly different. What is that slightly different? If the control and management is, बोलो बेटा, wholly or partly in India, क्या बोलेंगे? Resident. If control management is wholly outside India, non-resident. That's it. Friends, getting clarity everybody? So speak out. Friends, one last time, please tell me how many basic conditions are there? 2. First one is 182 days or more during the previous year. Second, 60 days or more during the previous year. And 365 days or more during 4 years preceding the previous year. But my dear friends, there are 3 special cases where 2 conditions will not apply, only 1 condition will apply. That 3 special cases are extremely important. High possibility that question will come in the exam. And it takes sweet time to understand what are the 3 special cases where first condition will apply but not second condition, which we'll talk in detail very much tomorrow morning as soon as we come. Clear, my dear friends? And once that discussion of 3 points is over, we can start solving problems. ठीक है ना बेटा? So कल हम 3 केस खत्म करेंगे, प्रॉब्लम्स चालू करेंगे. परसों हम लोग सेक्शन 7, सेक्शन 9 बात करेंगे और थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. समझ में आया बेटा? Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Have a great day. Enjoy.